Hello everyone, welcome you all. Let's start our discussion and solve Opsc Polytechnic lecturer question paper. As you know, there are total of 100 questions, but in this video we will solve the first 20 questions. Okay, let's start. Question number 1. A power amplifier gives 150 watt output for an input of 1.5 watt. The gain in decibel is. Okay. देखो जनरली जदि केवल सी गेन पचारुची ताले हमर गेन कोन हेजिवो ना आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट बट एठी से कोन पचारुची ना गेन इन डेसिबल तो तुमको फार्मूला यूज करिबा को पड़िबो कोन कि गेन इन डेसिबल इक्वल्स टू 10 log 10 पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट ओके देखो हमको गेन कैलकुलेट करिया पई पड़िबो पावर को नेकी जदि से वोल्टेज बा करंट थ्रो रे पचाउची सेही केस रे कोन हबो ना 20 log 10 voltage output by voltage input and 20 log 10 current output by current input okay but এই কেসরে পাওয়ার ফর্মুলা আমি ইউজ করিবা তাহলে কোন হবো না 10 log 10 power output by power input okay so here power output is this is 10 log 10 power output is 150 input is 1.5 तो केते आछी हमर रेशियो ना 100 10 log 10 10 to the power 2 तो 2 आसी की मल्टीप्लाई हेजिवो तो केते हेजिवो ना 20 log 10 10 log 10 10 जे 1 so answer will be 1 so your correct option is option B. Next, a field effect transistor is a unipolar device okay because it uses either electron or hole a charge carriers during its operation. एफईटी रो आउ किछि इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज अछि मन रखिबो जेमति कोन ना एफईटी इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एफईटी इज ए voltage control device आउ कोन FET is having high input impedance FET is having high input impedance सिमिलरली बीजेटी ऊपर भी ए टाइप रो क्वेश्चन आसे हैला कि तो बीजेटी पई मन रखिबो फॉर बीजेटी is a bipolar device it uses both electron and hole as charge carriers okay bipolar device then BJT current control device okay next how kono FET high input impedance BJT is having low input impedance next in an NPN transistor the leakage current consists of holes moving from the collector to the base okay so your correct option is option B. Next for this circuit shown below the potential difference involved across RL H okay तो देखो ये जो सर्किट अछि हमको वोल्टेज डिफरेंस को आरएल अक्रॉस रे कैलकुलेट करिया को अछि तो जदी एठी कोन हबो हमें दीटा लूप कंसीडर करिके लेट दिस इज आवर फर्स्ट लूप and this is our second loop okay second loop हमें जदी दीटा लूप कंसीडर करिबा आ करंट फ्लोइंग across RL current flowing through this RL हमें कैलकुलेट कर दवा ताले वोल्टेज कोन हेजिबा हमरो ना करंट into resistance R V equals to IR okay तो फर्स्ट हमें कोन करिबा ना लूप कंसीडर करिके करंट फ्लो कैलकुलेट करिबा थ्रू RL तो देखो ए सर्किट ले कंसीडर करो कि ड्यू टू दिस 76 there is current I2 now for this in this loop the current I1 so total current flowing through this RL I1 plus I2 okay so for first loop using KVLs okay I can write the KVL equation like this from this side I am writing so 38 equals to 5
I1 plus 4 into I1 plus I2. So from here we will get 9 I1 plus 4 I2 equals to 38. सेमती सेकेंड लूप रो हमको कौन मिलिबो ना 76 equals to 2 into I2 plus 4 I1 plus I2. तो ये केते हिजिबो 6 I2 4 I1 plus 6 I2 equals to 76. तो देखो एठी कोन ना दुईटा इक्वेशन दुईटा अननोन तो तुमे कोनोसी प्रोसेस यूज करके भी कैलकुलेट कर परियो हेले कि सो मु एठी कोन करछ देखो जे फर्स्ट इक्वेशन लो सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दियो 4 और 6 मल्टीप्लाई करके तो एटा कोन हिजिबो ना 6 into 9 I1 plus 4 I2 equals to 38 4 into 4 I1 plus 6 I2 equals to 76 minus. Okay. तो देखो एक 9 into 6 54 4 into 4 16 so it is 38 I1 this will be 228 304 228 minus 304 so this is 38 38 I1 equals to ये केते आछी minus 76 okay so I1 equals to minus 2 ampere अच्छा देखो I1 minus 2 आछी ता माने कोन की हमें जो डायरेक्शन ले I1 लो डायरेक्शन कंसीडर करछु तार ऑपोजिट डायरेक्शन में से फ्लो होउची हेले तो देखो एठी हमको I1 लो वैल्यू मिली गला -2 तो हमें कोन करबा एबे I2 रो वैल्यू कैलकुलेट करि परिबा I2 रो वैल्यू केते हिचिबो ना 4 I2 equals to 38 minus 9 I1. So 38 plus 9 into 2, 18. So this is 56. So from here I2 equals to 56 by 4 14 ampere. Okay. So total current kete hichibo I1 plus I2. Total current I1 plus I2. So 14 minus 2 that is 12. So voltage will be 12 into 4 48 volt. Okay. So here answer will be 48. So A is your correct option. Next, the de Broglie wavelength of particle of mass m with average momentum p at a temperature T in 3 dimension H. Okay. देखो wavelength को केमती डिफाइन करा जाय ना h by p. ओके तो एठी हमको कोन करिया पड़िबो ना जो गिवन अछि टेम्परेचर इन मास टर्म रे मोमेंटम को एक्सप्रेस करिया पई पड़िबो तो देखो मोमेंटम को अब एनर्जी को हमें केमती रिलेट करू ना एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m so from here momentum equals to square root under 2me और ए केस रे एनर्जी कोन हबो ना 3 by 2 kbt kb is your बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सो तमे जदि पुट करिवो एठु वेवलेंथ लैम्बडा र वैल्यू कोन आसीबो ना h by square root under देखो 2 2 कैंसिल हे जिवो तो कोन रहइबो ना 3m kb t so your correct option is option B. Next, a particle is moving in a spherically symmetric potential V of r equals to alpha r square where alpha is a positive constant in a stationary state the expectation value of kinetic energy of the particle is तो देखो ए क्वेश्चन टा कोन कि भेरियल थ्योरम रो आछि लाइक भेरियल थ्योरम रो जो दुटा स्टेटमेंट मन रखिबो if potential is varies as r to the power n then expectation value of kinetic energy will be equals to n by 2 of expectation value of potential energy but if force dimensions are as r to the power n then in this case expectation value of kinetic energy will be equals to n plus 1 by 2 expectation value of potential energy तो एक केस रे देखो एठी कोन होची ना पोटेंशियल एनर्जी रो वेरिएशन देइची
कौन अच्छी ना पोटेंशियल एनर्जी वेरीजेज r to the power 2. So expectation value of kinetic energy will be equals to n by 2. So 2 by 2 expectation value of potential energy. तो एठी कोन होइजिवो ना 2 by 2 cancel. So kinetic expectation value of kinetic energy equals to expectation value of potential energy. So A is your correct option. Next, 7. An atom emits a photon of wavelength 600 nanometer by transition from an excited state of lifetime this. If del nu represents the minimum uncertainty in the frequency of the photon, the fractional weight del nu by nu of the spectral line is of the order of. अच्छा देखो एठी से केवल ऑर्डर ही पचाउची तो तुम इजीली कैलकुलेट कर परियो del nu देखो लाइफ टाइम देइची तो del nu को हमें केमते एक्सप्रेस करिया ना 1 by 2 pi tau तो tau रो वैल्यू मिल गलो तुमको केते ना 8 into 10 to the power minus 9 second न्यू by कोन करिवो ना हमें जानि छे c equals to lambda nu so nu will be c by lambda तो एबे del nu by nu रे वैल्यू पुट करिवो देखियो आसीवो ऑर्डर 10 to the power minus 8 so here c will be your correct option. First order transition at the transition temperature specific heat of the system देखो से फास्ट ऑर्डर ट्रांजिशन पाई स्पेसिफिक हीट पचारुची स्पेसिफिक हीट कौन है ना इट डाइवर्जेस फॉर फास्ट ऑर्डर ट्रांजिशन एंड इट्स एंट्रोपी हैज फाइनाइट डिसकंटिन्यूड ओके सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर. अच्छा देखिबा जदि हमें फास्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन पाई फास्ट ऑर्डर रे हमर कोन होई कि ना फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हमें कोन जानिछु फास्ट ऑर्डर रे गिव्स फ्री एनर्जी remains continuous but the fast derivative of Gibbs free energy is discontinuous across the transition temperature okay that is fast derivative of Gibbs free energy with respect to temperature and pressure okay तो देखिबो जदि Gibbs free energy रो fast derivative discontinuous होची आमे देखिबा जो physical quantity Gibbs free energy रो fast derivative रो डिफाइंड होतबे तो से सब भी डिसकंटिन्यूअस हेबे तो जेमति कि कोन ना एंट्रोपी एंड वॉल्यूम तो देखिबो जदि स्पेसिफिक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वैलिडेट्स अंडर फॉलोइंग गाइडलाइंस एंड यूजफुल हिंट्स तो देखो हमें एंट्रोपी को एठी केमते डिफाइन करिवो ना दिस विल बी माइनस del g by del t at constant pressure okay and volume will be this is your del g by del p at constant temperature so देखो एंट्रोपी केमती डिफाइन होची ना फास्ट डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर अब फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पाई फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस ता माने कोन एंट्रोपी कोन हबो एंट्रोपी will be discontinuous but that will be having a finite discontinuity okay so entropy discontinuous volume discontinuous but तमे जदि देखिबो कोन कि हमरो स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ए सब कोन होबे ना ए सब डाइवर्जेस देखो स्पेसिफिक हीट को हमें केमते डिफाइन करछे कि डेल क्यू बाय डेल टी लाइक मन रखियो फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ले कोन के देयर इज either heat is absorbed or emitted okay so here del q some finite value but del t we are calculating this specific heat at this transition temperature so change in temperature is zero so something divided by zero will give us some infinite value so specific heat similar way isothermal compressibility and coefficient of volume expansion all these will be diverges at transition temperature first fast order of phase transition so similarly if you see some examples for fast order transition will be like the boiling of liquid is a fast order transition then vaporization of liquid is a fast order transition then your like melting of ice is a fast order transition okay next similarly हमें जो देखिबा second order phase transition तो एठी कोन होय Gibbs free energy continuous first order of Gibbs free energy is continuous but the second order of Gibbs free energy is discontinuous at the transition temperature okay
देन एग्जांपल जो देखिबो कोन our ferromagnetic to paramagnetic state, that is a second order phase transition. Then from superconducting state to normal state, that is your second order transition. Okay, and change of heat is not involved here. And this specific heat, isothermal compressibility, and coefficient of volume expansion all are discontinuous in second order phase transition. Next, a system of n non-interacting classical point particles constant to move on the two-dimensional surface of a sphere. The internal energy of the system is. अच्छा देखो या ପାଇଁ ଗୋଟେ theorem ଅଛି ମନେ ରଖିବ କି for each f degree of freedom there will be half kbt internal energy. तो ଏଠି ଦେଖ n ଟା non interacting particle ଅଛି ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ particle ପାଇଁ calculate କରିବା ଗୋଟେ particle ପାଇଁ ଆମର internal energy କେତେ ହେବ ନା half kbt degree of freedom କେତେ ଅଛି ନା 2 ତ 2 multiply ହେଇଯିବ ତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା total kbt internal energy for one particle for this system for a particle move on the two dimensional surface of sphere. Total number of particles केते ना n, so तो total energy केते ହେଇଯିବ ना n kbt. kb is your Boltzmann constant, so C is your correct option. Next question. 10. The free energy of a photon gas enclosed in a volume V is given by this expression, where alpha is a constant and T is the temperature of the gas. The chemical potential of the photon gas is. तो देखो एठी किछि डेरिवेशन ही करिवा दरकार नै तमे गोटे जिंस मन रखिबो केमिकल पोटेंशियल बेसिकली कोन एक्सप्रेशन आसे मन रखिबो इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव for the particles following the Fermi direct distribution function, and it is negative or zero for particle following Bose-Einstein distribution, and it is negative for Maxwell-Boltzmann distribution. And remember, for photon, the chemical potential is always zero. So here you can choose that option A is your correct option. That is the chemical potential of the photon gas is zero. Next, 11. Two particles are said to be distinguishable when the average distance between them is large compared to their de Broglie wavelength. So A is your correct option. Next, 12. The probability that a state which is 0.2 electron volt above the Fermi energy in a metal atom at 700 Kelvin is. अच्छा, probability. तो हमें एक केस probability केमते define करिवा ना f of e equals to 1 by exponential e minus ef by kbt plus 1. Okay, so देखो energy e minus ef रो value से केते देइछि ना the state which is 0.2 electron volt above the Fermi energy. तो एटा केते हिचबो डायरेक्ट ना 1 by exponential 0.2. अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रो वैल्यू केते करे kv equals to मन रखिबो एटा 1.38 into 10 to the power minus 23 joule by Kelvin. तो Kelvin कैंसिल हिचबो टेंपरेचर वैल्यू केते अछि ना 700 ହେଲା କି प्लस 1. अच्छा, ए सब वैल्यू पुट करिवो 1.38 into 10 to the power minus 23 into 700. तो एको कैलकुलेट करिवो देखिवो ये आसीबो केते कि ना 3.54 3.5%. So C is your correct option. Next, which of the following statements is true? अच्छा, देखो से कोन पचारछि माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल और कैनोनिकल एनसेम्बल को क्वांटिटी सब कांस्टेंट रहउछि तो हमको जणा अछि कोन कि माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल कोन कांस्टेंट होय करी ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स then your volume and energy. Okay, and for canonical ensemble number of particles, volume and temperature. And for grand canonical ensemble
This is your chemical potential mu, volume, and temperature. So you can check option A is your correct option. In a microcanonical ensemble, the total number of particles n and the energy E are constant, while in a canonical ensemble, n, temperature T are constant. Okay. Next, 14. If the isothermal compressibility of a solid is 10 to the power minus 10 Pascal inverse, the pressure required to increase its density by 1% is approximately. Like, तो देखो याको केमती कैलकुलेट करिवो ना हमको जणा अछि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी केमती एक्सप्रेस करा जाय करे ना 1 by v del p at constant temperature हेले से कोन कहउछि ना आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी रो वैल्यू गिवन अछि केते ना 10 to the power minus 10 पास्कल इनवर्स आ कोन ना द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स डेंसिटी बाय 1%. ओके तो ये जो एक्सप्रेशन आमे लिखिछु आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को फॉर्म रे अछि ना वॉल्यूम टर्म रे अछि तो हमको फास्ट कोन करिया पड़िबो ना याको डेंसिटी टर्म रे एक्सप्रेस करिया पड़िबो अच्छा ए जो तीनटा क्वांटिटी याको मन रखिबो एग्जाम रे बहुत बार ये सब क्वांटिटी रे कोन की फॉर्म पचाता है जेमति कि बल्क मॉडुलस माइनस v del p by del v at constant temperature आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ओके अच्छा तो एठी कोन करिबा ना आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को फास्ट हमें कौन करिबा डेंसिटी फॉर्म रे एक्सप्रेस करिबा कि 1 by v del p by del p at constant temperature डेंसिटी हम कौन जणा अछि ना रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय रो सो एटू del v केते मिलि जिवो ना m by रो स्क्वायर d रो तो तमे एटी पुट कर देले देखिबो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी रो एक्सप्रेशन कोन आसीबो ना 1 by रो del रो by del p अच्छा नेगेटिव साइन मु कंसीडर करनी माइनस टी ओनली मैग्नीट्यूड हेले कि तो एठो देखो मु कोन लिखि परिबी ना del p इक्वल्स टू del रो बाय रो 1 by kt बुझिला कथा तो एबे हमें जो से पचारछि चेंज इन प्रेशर फॉर इंक्रीज इन डेंसिटी ओके हमें कैलकुलेट कर परिबा तो देखो सी del रो बाय रो रो वैल्यू केते देछि ना 1% 1% जे 1 by 100 into 1 by kt kt रो वैल्यू देछि 10 to the power minus 10 तो ये केते हिजिबो 10 to the power 8 so change of pressure will be 10 to the power 8 for a increase in density of 1% okay so c is your correct option. Next 15. The population inversion in a two-level laser material cannot be achieved by optical pumping because the rate of upward transitions is equals to the rate of downward transition. Okay, so A is your correct option. Next, 16. The coherence length of laser light is. अच्छा देखो coherence length केमती define करू करे ना LC equals to C tau tau जगह रे हमें कौन लिखो ना 1 by del nu अच्छा ये एठी वेवलेंथ टर्म रे पचाउची तो तुमे del nu को भी चेंज कर दबो कोथरे वेवलेंथ रे हमें जानिचु कोन c इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू सो न्यू इक्वल्स टू c by लैम्बडा और del nu केते हे जिवो कि c by लैम्बडा स्क्वायर del c by लैम्बडा स्क्वायर del लैम्बडा ओके सो हमें जदी पुट करिवो यार वैल्यू केते आसीबो करी ना लैम्बडा स्क्वायर by del nu. So this coherence length is proportional, directly proportional to the square of the wavelength, but inversely proportional to the width of the spectral line. So inversely proportional to the width of the spectral line. So C is your correct option. Next, 17. For an electron in the hydrogen atom, the states are characterized by the usual quantum numbers n, l, m. The electric dipole transition between any two states requires. Okay, okay. देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन पाई कंडीशन कोन करे ना del l equals to plus minus 1 del ml equals to 0 plus minus 1 del s equals to 0 and del j equals to 0 plus minus 1 एक एति कंडीशन मन रखिबो कहा पाई ना इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन पे सो चेक करो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन del l equals to plus minus 1 and del ml equals to 0 plus minus 1
Next, 18. The number of fundamental vibrational modes of carbon dioxide molecule is. अच्छा देखो एटी आंसर 4 आसीबो केमति कि आमे जानिछु कोन ना फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड पई जो आमे फार्मूला यूज करू कोन ना 3n-5 कोन पई ना जदि लिनियर मॉलिक्यूल हेतिबो जाकी कार्बन डाइऑक्साइड लिनियर मॉलिक्यूल ताले हमें एटी फार्मूला कोन यूज करबा ना 3n-5 तो n कोन ना नंबर ऑफ एटम्स केते अछि ना c दुईटा ऑक्सीजन सो टोटल 3 तो 3 * 3 - 5 जो 4 तो आसीजिबो 4 आसीबो कोन ना हमर नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स बट से पचाउछि ता भितरु पुनी केतेटा रमण एक्टिव केतेटा इंफ्रारेड एक्टिव लाइक तो कैलकुलेट करिया जिबा पूर्व देखो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पई फार्मूला कोन ना नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पई फार्मूला हला हमरो 3n-6 मन रखिबो एतरा अपन एबे देखो नेक्स्ट एटी कोन अच्छा ए जो वाइब्रेशनल मोड पई केमते आसीबो करे ना गोटे आसीबो स्ट्रेचिंग रो आउटे आसीबो बेंडिंग रो स्ट्रेचिंग कोन हो आइदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग रे कोन आसीबो ना डाइपोल मोमेंट 0 आसीबो अच्छा हमें केमती जानिबा कि कोउटा एक्टिव कोउटा इनएक्टिव इंफ्रारेड एक्टिव को केस रे हेबो ना जो केस रे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वैल्यू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग रे कोन होबो डाइपोल मोमेंट 0 तो ये कोन हेजिबो इंफ्रारेड इनएक्टिव दैट मींस दिस विल बी रोमन एक्टिव बट आउ जदि केस रे देखिबा जेमति कि कोन ना एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग रे सेठी कोन होबो ना डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होबो ताले ये कोन होबो ना इंफ्रारेड एक्टिव नेक्स्ट कोन आसीबो ना बेंडिंग बेंडिंग दुईटा जाको केस रे बेंडिंग रो दुईटा जाको केस रे कोन होबो ना डाइपोल मोमेंट होबो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट जदी नॉन जीरो होउची ताले कोन होबो ना से सब इंफ्रारेड एक्टिव हेबे ताले हम एठी भी नॉन जीरो एठी भी नॉन जीरो ताले हमें कोन देखिबा ना 3 इंफ्रारेड एक्टिव एंड 1 रोमन एक्टिव तो ऑप्शन चेक करो 3 इंफ्रारेड एक्टिव एंड 1 रोमन एक्टिव ओके सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन Next, 19. The NMR spectrum of ethanol CH3CH2OH comprises of three bunches of spectral lines. The number of spectral lines in the bunch corresponding to CH2 group. अच्छा देखो NMR spectrum ପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛି ଆଉ molecule କଣ ଦେଇଛି ନା CH3CH2OH तो कहा ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ସେ ବେସିକାଲି CH2 ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା कंट्रीब्यूशन कोठो आसीबो हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप रो कंट्रीब्यूशन किछ आसीबोनी आसीबो कोठो नै जो CH3 रो तो एठी केते तीनटा हाइड्रोजन अछि तो हमरो फार्मूला कोन ना 2ni+1 n कोन नै नंबर ऑफ प्रोटॉन बा नंबर ऑफ एठी हाइड्रोजन सो 2 * 3 * I स्पिन केते ना हाफ +1 सो 2 2 कैंसिल 3 + 1 जे केते 4 सो आंसर विल बी 4 D is your correct option. Next, 20. The order of magnitude of the energy gap of a typical BCS superconductor is 1 milli electron volt. So, D is your correct option. अच्छा देखो एई टाइप रो क्वेश्चन गोटे न्यूक्लियर फिजिक्स टॉपिक रो भी आसे मन रखिबो से बारंबार पचारे जे न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन लो एनर्जी केते रेंज ऑर्डर मन रखिबो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टाइम मन रखिबो एनर्जी ऑर्डर केते ना 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट yes so let's stop here we'll continue from here in the next video I think this will definitely help you in your exam preparation and if you found this video helpful don't forget to like share and subscribe to our channel thank you see you in the next one